ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आ गए सब? वालेकुम सलाम। तो आ गए सब, तो मैं शुरू करूं? सर अभी सारे नहीं आ गए। लेकिन आप वेट भी नहीं कर सकते ना, ये 40 मिनट का होता है। ठीक है ओके ओके, लास्ट टाइम हमने जो किया था, और भी 3 आ गए भाई। ओके, हम कर रहे थे बेसिकली, अरे लाइट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी देखता हूँ मैं कहाँ तक चलता है इसका ये। हाँ, तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इस स्पेस की, यही था ना हमारा। So this was a linear space. It was all mappings from x to y such that t is linear. Of course x and y are normal linear spaces, को तो तुम्हें पता ही है। ये linear है और साथ में it is continuous also, which is equivalent to saying that norm of tx is less than equal to k times norm of x for some positive number k and for all x belonging to x. Okay, so हमने बताया था ये of course vector space है और normal space भी है when we define our norm to be supremum over the norm x less than equal to 1 norm of tx, which is the same thing as कभी-कभी the supremum of the set if I take all tx's in norm and let x range over the unit ball and the norm of x is less than equal to 1. तो कभी-कभी हम इस सेट को, चलो मैं फिर से, मैंने कहा था ये सेट बड़ा स्पेशल है नॉर्मल लीनियर स्पेस में, तो यूनिट क्लोज्ड बॉल, इसके हम काफी सारे नाम देते हैं और हमने जो नाम यूज किया था एक जगह एस किया था, लेकिन यूजुअली इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं b1, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो ये है b sub x। तो वी टेक सुप्रीमम। तो अगर नॉर्म ऐसे डिफाइंड है तो हमने दिखाया ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है। द क्वेश्चन इज इट कंप्लीट? और हमने ये कहा था उस थ्योरम में, इफ y इज कंप्लीट, y इज कंप्लीट, सो इज bxy। एक्चुअली इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इफ bxy इज कंप्लीट देन y इज कंप्लीट, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। हाँ, बिफोर दैट एक्चुअली जो ये है norm of t, we could have also defined it to be infimum of all k, infimum याद रखना, such that t of x is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. Should I ये मैं करूं कि पहले मैं वो खत्म करूं? अगर मैं इस सेट इन केस का infimum, no, remember that what is the definition of the normal linear? ये definition of bounded linear operator, it is this thing, ठीक है, k times norm of x। तो सपोज k है 2, है ना, तो अगर मैं k को 3 लूं तब ये ट्रू होगा ना, because 2 times norm of x is also less than 3 times norm of x। so ये k के वैल्यूज तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, है कि नहीं? तो of course it is bounded below because these are non-negative numbers, they are bounded below, so these k's must have an infimum। ये कुछ और कहां से आ रहा है? So what I am trying to say is this, कि ये जो k's हैं which are these bounds here over the unit ball, I must have it must be a set that is bounded below because this is greater than equal to 0, so this is bounded below। k are non-negative numbers and there is a set, अगर 2 है 3 है, so there are many k's which would satisfy। if one satisfies there would be a lot many, so if we take the infimum of this would be the same thing as, now think about this, now you have got, चलो मैं पहले इसी को टैकल करता हूं। पहले मैंने कहा था अगर मैं इसका सुप्रीमम लेता हूं
norm x less than equal to 1, then this is defined to be norm of t. But this is also equal to if I take supremum over the boundary, यानी अगर मैं लूँ norm x equal to 1, norm of tx. Now why would that be the case? मतलब ये equality हम दिखा सकते हैं. It's simple to show. पहली बात तो ये है कि supremum over norm x equal to 1, norm of tx is automatically less than equal to supremum. I have to show the converse actually. Why is that the case? कोई बता सकता है? Why is this true? Because left hand side is supremum over a smaller set. So supremum over a smaller set is smaller. The question is क्या ये भी सही है? अगर ये भी हम दिखा सके then they must be equal, यानी this must be true. ये वाला portion. तो अगर मैं फिर सुप्रीमम को ऐसे डिफाइन करता हूं तो मैं उसको नॉर्म ऑफ टी को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों बराबर है. Now to show the other inequality, let me write here. Now suppose norm x is less than equal to 1. It implies that norm of t of x is less than equal to norm of t of x multiplied by norm of x. Now, using the linearity of t and properties of norm, it implies that, what does it imply? It means that t of x by norm x. मैंने सही किया? नहीं, मैंने गलत किया. ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये छोटा है 1 से. So it means that t of, अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊं, फिर मैं properties of the norm और linearity of t use करूं, I should get this thing. और अगर मैं next page पे जाऊं, यानी I have got norm of t of x, oh sorry, norm of t of x by norm x is greater than equal to norm of tx. और ये कब है? For norm x less than equal to 1, right? So उसका मतलब हुआ सुप्रीमम अगर सब के लिए है तो सुप्रीमम norm x less than equal to 1, norm of t of x is less than equal to, ये मैं अब इसको पहले लिखूंगा क्योंकि सारे एक्सेस के लिए तो सबसे बड़े वाले के लिए भी होगा, is less than equal to t of x by norm x. So which mean is that, but this is less than equal to supremum अगर मैं लूं y, norm of y is equal, because this is a subset of these many elements. I hope you understand this. Which is the same thing as supremum norm x equal to 1 norm tx. तो ये भी ट्रू है. सो देयरफॉर जो मैंने नॉर्म डिफाइन किया था ना, नॉर्म ऑफ टी, it can be written as supremum norm x less than equal to 1 norm of tx, but this is also equal to supremum if I take only over a smaller set, it would be बराबर होगा. ठीक है. सो ये सेटल करने के बाद अब मैं उसके लिए रेडी हूं. नाउ लेट, तो another, फिर ये मैं कह रहा हूं then t is also equal to infimum of all k's such that this inequality holds. So ये इसके बराबर है. Suppose this be equal to alpha. मैं दिखाना चाहता हूँ अल्फा, मतलब मान लो इसका नाम अल्फा है तो मुझे दिखाना है अल्फा k के बराबर है. So alpha is infimum of this set, right? Alpha is now equal to k infimum of k. Okay, infimum over k फिर से मैं लिखता हूँ. चलो, norm of tx less than equal to k times norm of x. ध्यान से इसमें सबसे छोटा वाला member. Now that would be equal to infimum of k such that norm of, using the again the linearity of t and the properties of the norm, t of x by norm x is less than equal to k. Okay, now what I am saying that this is actually equal to supremum norm x equal to 1 norm of t of x.
which is the same thing as norm of t. Now why would this, the question is, इस equality पे हमें ये तो है ही इसके बराबर, ये इसके बराबर है, the question is this step, क्या ये इसके बराबर होगा? Of course होगा, क्योंकि यहाँ पे जो tx है, ये जो है ना, इसका norm 1 है, मतलब ये इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और ये जो है ये इससे लेस देन इक्वल टू, अब सोचो इस तरह से, जो सुप्रीमम होगा नॉर्म ओवर नॉर्म x इक्वल टू 1, ये जो t ऑफ x है जो इसका सुप्रीमम होगा, सोचो इसका सुप्रीमम, अरे क्या है, क्या हो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, बंद करो ना। सुप्रीमम होगा बिगर देन इक्वल टू, ऑफ कोर्स बिकॉज ये सुप्रीमम है, t ऑफ x बाय नॉर्म x, राइट, होगा ना, क्योंकि ये सुप्रीमम है, और x पे नॉर्म x का सच में नॉर्म 1 है, तो ये उन सब का सुप्रीमम है, तो ये इससे बड़ा होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका जो अपर बाउंड है और इसका जो लोअर बाउंड है ना, तो आई एम सेइंग इन्फिमम, मतलब t ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k, तो मैं कह रहा हूं इस सेट का, उन केस का जो यहाँ पे केस रहते हैं, यानी t ऑफ x बाई नॉर्म x इज लेस देन इक्वल टू k, उस सेट का इन्फिमम और इस सेट का सुप्रीमम सेम होगा। ये इसी तरह से है जैसे हम डेडिकेंट कट्स देखते हैं, तो यहाँ पे एक सेट रहता है और यहाँ पे एक सेट रहता है, तो इस सेट का सुप्रीमम और इस सेट का इन्फिमम सेम होने चाहिए, यानी ये जो इन्फिमम है इट शुड बी इक्वल टू, मतलब दिस इज करेक्ट। सो विच मीन्स दैट अब ये जो नॉर्म ऑफ टी है, इट इज इन्फिमम ऑफ दीज मेंबर्स जो k है, यानी अगर tx जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, इट इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x, देन नॉर्म ऑफ t जो हमने इस तरह से डिफाइन किया था, इट इज वन ऑफ दीज मेंबर्स, इट इज द लीस्ट ऑफ दीज नंबर्स जो यहाँ k है। So in other words, I can write t of x is less than equal to norm of t into norm of x. ये भी याद रखो कि norm of t जिस तरह से हमने डिफाइन किया वो इनमें से एक मेंबर है, बल्कि उनका सबसे छोटा वाला भाई है। So in fact I can say अगर t of x is less than equal to k times norm of x for some t and t is a bounded linear operator, then k is always less than equal to norm of t. क्योंकि नहीं सॉरी, गलत मैंने लिखा, norm of t is less than equal to k. That is basically the definition. Okay, so I hope I have clarified it a bit. Now we come to show that जो मैं चाहता था कि if y is complete, bxy is complete, और norm हमें पता है, लेकिन just a minute. So what we do now, suppose y is complete, इसे तुम्हारे नोट्स में तो बहुत अच्छे से दिया हुआ, I have to show that bxy, तो मुझे दिखाना है हर कोई कोशिश सीक्वेंस जो है वो वहां पे कन्वर्ज करती है। So let Tn be a Cauchy sequence in pxy. I have to show that it converges inside the same space. तो Cauchy का मतलब है, now we know that norm of Tn minus Tm of x. Now tell me one thing. अब ये एक वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे T1 है, T2 है, वो इसी में बिलोंग करते हैं ना, क्योंकि यहाँ से मैंने सीक्वेंस ली है। अब ये चूंकि ये वेक्टर स्पेस है, तो उसका मतलब T1 T2 भी बिलोंग करते हैं bxy में। इट्स अगेन ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बिकॉज इट्स अ वेक्टर स्पेस। ये जहां से आवाज आ रही है ना उसको म्यूट करो आप, जहां कोई आवाज। Now, so what I'm trying to say, this thing
also belongs to the boundary linear operators. But this is less than equal to by जो मैंने अभी इससे पहले कहा था norm of Tn minus Tm into norm of x. Now this is true for all x belonging to x. Because I just applied that norm of Tx is less than equal to norm of T into norm of x. Okay, but this is equal to, लेकिन ये किसके बराबर है? This is the same thing as Tn of x by definition minus Tm of x. Okay, तो कहने का मतलब है अगर ये कोशी सीक्वेंस है, अगर मैं x को फिक्स करता हूं, कोशी सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? मतलब दिस वुड अप्रोच टू जीरो, मतलब क्योंकि Tn इज अ कोशी सीक्वेंस इन bxy, ये जो यहां से यहां तक की जो नॉर्म में बैठा है ना, this would become arbitrarily small as nm approaches infinity. लेकिन अगर x फिक्स्ड है, x कोई चेंज नहीं करता, it is some finite quantity, fixed quantity, finite and fixed, because it is norm of x. अगर मैं x को बिठा के रखता हूं and I let nm approach infinity, it means this becomes zero. But this is, लेकिन ये जो left hand side है वो तो उससे छोटा है, so इसका मतलब this would approach to zero as nm approaches infinity. But what are these? These are vectors inside y, because Tn हो या Tm हो, they are maps from x to y. So जब इसमें x लगेगा तो they would be inside y. तो इसका मतलब अगर Tn एक कोशी सीक्वेंस है यहाँ पे bxy में, तो for each x, तो it implies that this Tnx, जब मैं इसको आर्गुमेंट देता हूं x for each fixed x, is a Cauchy sequence in y for each fixed x, right? Okay, and y is complete. By our supposition, y is complete. So there exists a vector, let's call it tx. मैंने ऐसे इसका नाम tx लिखा है because it depends upon x. For each x there would be a vector, so belongs to y. So actually it defines a map from x to y itself. क्योंकि x वहां पे है, we are getting something in y. So I call it tx, such that Tnx converges to tx as n approaches infinity for each x. Now we just have to show that ये जो t इस तरह से मैप होगा वो भी बिलोंग करेगा किसमें? bxy में. तो अगर हमने वो कर दिया तो we are done. So this defines, जैसा कि मैंने कहा था, this defines a mapping t from x to y. Now चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, by the joint continuity. So now how is map of t defined? Now t is defined from x to y by t of x is equal to limit as n approaches infinity Tn of x. We know this limit exists. The question is it linear? तो वही मैं लिख रहा हूँ जो तुम्हारे नोट्स में ऐसे लिखा होगा, by joint continuity of addition and scalar multiplication, क्योंकि ये operations continuous होते हैं, scalar multiplication in both x and y, t is linear. t is linear. मेरे कहने का मतलब है t of, ये नोट्स में नहीं है, t of x plus y इसके बराबर होगा limit n approaches infinity Tn of x plus y. That's the definition. Now the situation ये जो है Tn linear है, so this would be limit n approaches infinity Tn of x plus Tn of y. लेकिन क्योंकि addition continuous है, I can take the limit inside. So this would be limit n approaches infinity Tn of x
plus limit n approaches infinity tn of y. Same is true for scalar multiplication. Now this is the same thing as by definition. इसी तरह से scalar multiplication, क्योंकि ये continuous है, so t is a linear transformation. So t is linear. So to conclude the proof, हमें दिखाना है t is also continuous. To conclude the proof, we have to show that t is continuous. Now that would be sufficient. And of course continuous तो दिखाना है, साथ में है कि tn approaches हमें तो सिर्फ point wise convergence दिखाई है. This means जैसा कि मैंने इससे पहले दिखाया वो this means actually point wise limit. हमें दिखाना है norm में लिमिट है, यानी मुझे दिखाना है norm of tn minus t goes to 0 और साथ में ये भी कि t is continuous. Now I have to show that tn approaches t with respect to the norm जो है इसमें, to the norm on dxy, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जेंस का मतलब है नॉर्म के अंदर कन्वर्जेंट हो. Now that's not difficult. Now since जैसा कि हमें पता है नॉर्म की प्रॉपर्टी ये है, norm of tn minus norm of tm in mod is less than equal to norm of tn minus tm. ये नॉर्म की प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी. तो इसका मतलब अगर ये कोशी सीक्वेंस है इनसाइड दिस, मतलब दिस इज अ कोशी सीक्वेंस, टी एन आर अ कोशी सीक्वेंस इनसाइड बी एक्स वाई, ये जो इनके नॉर्म्स हैं ये वाले लोग, इट इज अ कोशी सीक्वेंस इनसाइड आर. सो देयरफॉर आई कैन से बाय दिस, क्योंकि बाय सपोजिशन दिस इज अ कोशी सीक्वेंस, सो आई कैन से नॉर्म्स जो हैं इनके सभी ऑपरेटर्स के is a Cauchy sequence in R. But Cauchy sequence in R are convergent, which implies that this set जो है is convergent in R and hence bounded. Convergent sequences of scalars are bounded. तो ये तो bounded है. So this is a bounded set of variables. तो इतना तो काम हो गया हमारा, थोड़ा सा करना है, we are done. So अगर मैं देखना चाहूँ norm of tx किसके बराबर होगा, norm of tx is nothing but limit as n approaches infinity norm of norm तो बाहर है. अब क्योंकि norm continuous है तो I can take the limit outside. Norm is a continuous function, so you can take the limit outside. चलो ये भी अच्छा है. But this thing now tn is a bounded linear operator, so it means that it is less than or equal to norm of tn into norm of x. But this set is bounded. तो अगर ये bounded है, so this limit whatever it is should be less than equal to, let me call it supremum. क्योंकि bounded है तो उसका supremum होगा. अब अगर supremum है तो कोई number होगा. So उसका मतलब ये हुआ कि t is continuous. एक हिस्सा हो गया. दूसरा है कि हमें दिखाना है ना the second part. So t तो continuous हो गया. So it remains, यानी now we show, वैसे notes में थोड़ा अलग लिखा हुआ शायद, usually मैं उतना follow नहीं. So it is norm of tn minus t हमें दिखाना है क्या है यार. Norm of tn minus t दिखाना है it approaches 0 as it approaches infinity. Now let epsilon be positive now. And let this would be always true because it is a Cauchy sequence tn's such that m by mn greater than n naught would imply, of course it must exist, this n naught must exist for every epsilon because tn is a Cauchy sequence. Now let's take, now if norm of x is less than equal to 1 and साथ में ये condition भी अगर मैं साथ में रखूं, mn is, मतलब this is true because it is Cauchy sequence, it is the definition of the Cauchy sequence. So what do you get?
अगर ये है तो अगर मैं इसको इवेलुएट करूं, इस क्वांटिटी को, tmx minus tnx, right, is equal to, of course, norm of tm minus tn as a whole evaluated at x. This is less than equal to ये तो हम into norm of x, right, which is less than equal to norm of tm minus tn. Why? I'm choosing norm of x less than equal to 1, but this is less than epsilon. So what does that mean? Now we hold दोनों में से एक को फिक्स करो, क्योंकि m and r bigger than something, so I can choose one of them approach infinity, because bigger than, if infinity is bigger than anything. Now holding, चलो मैं m फिक्स रखूं कि n, जो भी तुम्हें मर्जी हो, चलो m fixed, तो and letting n approach infinity, so I would get, because it is true, it would all still be true that tnx minus t of x in norm is less than equal to epsilon for all n greater than n naught. तो अगर वो सच है, it would imply, what does it imply? अगर ये is less than equal to epsilon है and for all x norm of x less than equal to 1, तो वो भी तो condition है ना यहाँ पे. So it means that supremum over norm x less than equal to 1, क्योंकि सभी x's के लिए है, तो obviously tnx minus tx is less than equal to epsilon for all n bigger than epsilon naught. Okay, so what does that mean? Of course, that means norm of tn minus t, because that is the definition. It's less than epsilon for all n bigger than n naught, वगैरह. So which means that tn minus t जो है, it converges to 0. ठीक है? Okay, so that's done. And the proof is complete. So हमने दिखाया, हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया कि bxy under the norm, जो इसका norm है, norm of t equal to supremum over the unit ball norm of tx is a normal linear space. Furthermore, if y is Banach, if y is complete, then so is bxy. Okay, तो ये भी हो गया. Now I think आगे क्या करेंगे हम? So now let's come to one of our main theorems. Actually फंक्शन एनालिसिस में हम कहते हैं 3 मेन थ्योरम है. एक तो है जो हम नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज नोन एज हान-बानाक थ्योरम. Another one is uniform boundedness principle. And another one is closed graph theorem. Which is equivalent to open mapping theorem. ये हमें चारों करना है, तीनों एक्चुअली चारों, क्योंकि ये तो तकरीबन बराबर ही है. तो पहला वाला जिसको हम पकड़ेंगे वो होगा अपना हान-बानाक थ्योरम. हान-बानाक थ्योरम. हाँ, ओके. हान-बानाक थ्योरम कहता है if x is a normal linear space, हान-बानाक थ्योरम, if x is a normed linear space,
and y is a subspace of x. हाँ, बिफोर गोइंग मुझे कुछ डिफाइन करना पड़ेगा इसको स्टेट करने के पहले. हाँ, मुझे स्टेट करना चाहिए, मुझे पहले एक डेफिनेशन चाहिए. डेफिनेशन नहीं, इसी को थोड़ा चेंज करना. सो नाउ वी नो व्हाट इज दिस bxy. तो bxy इज, ऑफ कोर्स मैं फिर से रिपीट करता हूँ, t, all mappings t from x to y such that t is linear and continuous. ठीक है ना. और कंटिन्यूटी की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, जो कि हमने किया था. इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था कि t of x in norm is less than equal to k times norm of x. है ना. इसकी जगह मैं ये प्रॉपर्टी भी लिख सकता था, लेकिन you understand that. Now suppose I choose my y to be my scalar field. Now x is a normal linear space over some field over k, where k is real numbers or complex numbers. ठीक है. ओके. सो अगर मैं y की जगह रखूं k, मतलब बिकॉज एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ. तो अगर मैं अब ये वाला ढूंढूं, मतलब दिस इज आल्सो वैलिड, all bounded linear operators from t from x to k. Of course property तो यही है कि t is linear and continuous, but these are scalar valued linear continuous maps on x. तो पहली बात तो ये है कि इट इज वैलिड. जो भी हमने प्रूव किया वो इसके लिए प्रूव होगा. एंड फर्दर मोर, ये जो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये कंप्लीट होता है. तो हमने अभी किया कि अगर y कंप्लीट है, अगर ये जो दूसरी जगह यानी y की जगह जो भी हो, यहाँ k है, अब ये कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये जो bxk है, दिस इज कंप्लीट ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने y को कंप्लीट लिया है, बिकॉज दे आर ईदर रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब कंप्लीट, सो नाउ आई कैन से ये जो bxk है, it is a Banach space, automatic from previous chair. और इसको हम डिनोट करते हैं बाय x स्टार. x स्टार का मतलब है all scalar valued linear continuous mappings on the normal linear space x. इसके लिए हमने स्पेशल सिंबल लिखा है x स्टार, और पढ़ते हम इसको हैं डुअल ऑफ x. राइट. ओके. अब ये करने के बाद मुझे पेज बदलना पड़ेगा. So now my x star is what was this? This was t from x to k such that t is linear. चलो मैं यहाँ ऐसे करता हूँ, ये वो कोलन मैंने वहाँ डाल दिया ना. And continuous, और continuity का मतलब तुम्हें पता ही है. So usually हम क्या करते हैं, हम इसको कैपिटल लेटर के बजाय स्मॉल लेटर से, हम इसको कैपिटल लेटर के बजाय स्मॉलर लेटर से लिखते हैं. यानी टी के बजाय हम लिखते हैं, मतलब बिकॉज इट इज स्केलर वैल्यूड, मतलब कुछ नहीं है इसमें अदर देन दैट. तो चूंकि स्केलर वैल्यूड है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा के को, सो इट इज ईदर अ रियल नंबर आर और सी. तो इसको हम स्मॉलर ले लें. एफ इज लीनियर एंड एफ इज लीनियर, और कंटिन्यूटी की जगह हम लिखते हैं norm of fx is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. ओके. सो अब चूंकि ये जो स्केलर्स हैं, अब चूंकि ये स्केलर है, यहाँ नॉर्म होता ही मॉड है, तो यूजुअली हम इसकी जगह इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं. एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स norm of x for all x belonging to x. राइट. ओके. तो मेरा अब x स्टार बन जाएगा, जस्ट मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ क्या कि तुम्हें ये दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, such that f is linear and mod of fx is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x.
सो ये है x स्टार की डेफिनेशन। और इसी तरह से अगर मैं नॉर्म ऑफ f डिफाइन करूंगा तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। सुप्रीमम नॉर्म x इज लेस, क्योंकि अगर तुम बुक में ऐसे देखोगे यहाँ मॉडुलस होगा, क्योंकि इट इज अ स्केलर नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर, दैट्स द ओनली रीजन। ओके, ये करने के बाद मैंने कहा था मुझे चाहिए था हान बनाक थ्योरम के लिए ये डेफिनेशन कि व्हाट इज x स्टार, scalar valued continuous linear functions on normal linear space, and you can also, it is basically pxk, it's a Banach space, always Banach space, x Banach space हो ना हो, x star is Banach space। ओके, नेक्स्ट पेज करते हैं हम। तो अभी कितना टाइम है? अभी टाइम कम है तो शायद ये बंद हो जाए, फिर देखते हैं। ओके, अब जो हान बानाक थ्योरम है वो ये कहता है तो x, if x is a normal linear space and y is a subspace of x, and if we have an f that belongs to y star, that is f is a continuous linear functional, चलो इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, functional, for scalar valued linear continuous functions on y, then it can be extended to a f naught belonging to x star such that norm of f is equal to norm of f naught। ये तो स्टेटमेंट है लेकिन प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मैंने पिछले साल भी इसका बनाया था फॉर द प्रीवियस जो स्टूडेंट्स थे। ये मैंने 3-4 वीडियो लेक्चर्स में बनाया था हान बानाक थ्योरम, वो भी यूट्यूब पे है, तुम उसको भी कंसल्ट कर सकते हो। वो मैंने उस टाइम थोड़ा कागज पे बनाया था लेकिन अच्छा बना था वो। ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ, पहली बात तो ये कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड टू। एक्सटेंशन ऑफ ए फंक्शन मींस इफ आई, देखो अब जो है ना y इज इनसाइड x, राइट, ये मेरा y है, सबसेट ऑफ x है ना, तो मैंने इस पे एक फंक्शन डिफाइन की है टू द स्केलर फील्ड k, राइट, और उसका नाम है f। f is a function that is linear and वगैरह वगैरह continuous, right, defined on y, यानी it belongs to y star। तो then मैं ये कह रहा हूँ कि I can extend this, I can define f naught on the whole space, उसमें y भी आ गया ना, f naught is a map from x to k, उसमें y भी है ना अंदर बैठा हो। तो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि f naught अगर मैं देखूं, अब चूंकि ये x पे डिफाइंड है तो x के हर हिस्से पे डिफाइंड है, यानी it is also defined on y। Now f was initially defined on y, right? अब जो f naught है चूंकि पूरे x पे है तो y पे भी डिफाइंड है, उसी का हिस्सा है। तो उसका एक्सटेंशन का मतलब यह है कि